Hello everyone, welcome to Commodities Podcast. This is Anuj Chaudhary from Mirae Asset Sharekhan. Today we have an update on natural gas. MCX natural gas rose for the fifth consecutive session on Friday. It breached the middle Bollinger band and is continuously trading above the same over the past three sessions. The momentum indicator MACD is showing positive divergence, which indicates the short-term trend is bullish. However, it may find strong resistance at 61.8% Fibonacci retracement. We expect natural gas to remain strong. The immediate resistance is seen at 329.50 and strong resistance at 337.50. However, it may find support at 316.50 and 310 levels. A breach of this level could indicate a trend reversal. Thank you. नमस्ते, मैं अनुज चौधरी मिराए एसेट शेरखान की तरफ से आप सबका कमोडिटीज पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज जिस कमोडिटी की जानकारी देने जा रहा हूं वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस से पॉजिटिव क्लोज कर रहा है। इसने मिडिल बोलिंजर बैंड को ऊपर की तरफ ब्रेक दिया है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर MACD एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। ये सब फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। ऊपर पहला रेजिस्टेंस 329.50 और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 337 रुपया 50 पैसे पे दिख रहा है। नीचे पहला सपोर्ट 316 रुपया 50 पैसा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 310 के लेवल्स पे है। अगर ये ब्रेक करता है तो ट्रेंड रिवर्सल देखा जा सकता है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.